everyone, good afternoon. My name is SR Pusti. You are watching my beautiful channel Loving Science. So in this lecture, what I'm going to do, I'll explain in detail what is Einstein theory of photoelectric effect. So Einstein proposed photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory. What he suggested, whenever light travels, like whenever electromagnetic wave travels, that form is discrete form. Discrete form मतलब क्या है? मतलब light, as I have told in my previous lecture, light is nothing but bunch of photon particles. So each light particle is considered as photon. That is the discrete form. So each photon has energy of h mu. Again I repeat, light or electromagnetic wave travels in form of discrete format. मतलब light has some, light is a bundle of small packet which is called photon. So each photon has a frequency of mu and its energy is h mu or hc lambda. So you can say the energy of photon particle is hc by lambda. Okay. So what is suggested, what is the theory actually? So there are four things you need to remember. The first is electron emission takes place when there will be an interaction between electron and photon. So now इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन कैसे होता है देखो. लेट दिस इज ए फोटो सेंसिटिव मेटल. क्या है? फोटो सेंसिटिव मेटल. फोटो सेंसिटिव मतलब which sense the photo or which sense the light. Like cesium is a good photosensitive metal. So photosensitive metal मतलब which can sense the light or which can sense the photo. मतलब when light falls on a metal surface, then what will happen? As you know, the electrons are bounded on the metal surface due to the reforming force. Then first of all, the electron has to be escape out from the metal surface. Then electron emission can take place. What Einstein suggested, that electron emission takes place when electron will be escape out from the metal surface. So minimum amount of energy which will be given to the metal surface to escape out the electron, that is called work function. मतलब from that energy, some amount of energy is required to escape out the electron. That energy is called work function. That is phi naught. So मतलब whenever light falls on a metal surface, from that energy, from that incident energy, some amount of energy is required to just escape out the electron from the metal surface. Okay, and rest amount of energy will accelerate the electron, or rest amount of energy will impart the kinetic energy of electron. Understood? That is called Einstein photoelectric effect. Again I repeat, whenever light falls on metal surface, what will happen? From that energy, from that light energy, some amount of energy is required just to escape out the electron from the metal surface, and rest amount of energy will impart the kinetic energy of the electron. Okay, or you can say which will help to accelerate the electron. So that is called photoelectric effect. Okay, so वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? मैंने लास्ट टाइम बोला था फाई नॉट इज h इंटू म्यू नॉट. म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मतलब दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम दैट लाइट सोर्स टू एस्केप आउट द इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से इट इज hc upon lambda naught. Okay, so that is called Einstein photoelectric effect. And what is Einstein photoelectric equation? Einstein photoelectric equation क्या है? देखो, let this is a photosensitive metal. Okay, so now electromagnetic radiation or light falls on that metal surface. जैसे मैंने बोला लाइट का एनर्जी क्या है? What is the energy of light? h into mu, or energy of photon you can say, or hc by lambda. Okay, so these are the electrons. So जैसे मैंने previous slide में बोला, some amount of energy will help to escape out the electron, that is called work function. क्या है? That is called work function. And rest amount of energy will help to accelerate the electron or impart the kinetic energy. So as per the energy conservation, we can write the supply energy which will be coming from the light will be equal to the amount of energy which is required to escape out the electron, that is work function, plus maximum kinetic energy. So that is called Einstein photoelectric equation. ठीक है?
So we can write multiple equation by rearranging this. How? In place of E, I can write down h mu, which will be equal to phi naught plus k max. ये भी एक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है. और I can write down hc by lambda in place of this one, which will be equal to phi naught plus k max. और ऐसे भी हो सकता है, देखो, in I can write down h mu in place of e h mu in place of phi naught, मैंने phi naught रखा. Then k max in place of k max I can write down half mv max square, because kinetic energy half mv square. Okay, that is also Einstein photoelectric equation. Okay, okay. Now one more thing you need to remember, that is called stopping potential. क्या है? Stopping potential. Stopping potential actually क्या होता है? Stopping potential is a retarding potential. It is a retarding or negative potential. It is a negative potential which will stop the acceleration of electron, or which can say, from that stopping potential, whatever the amount of work done will be there, that will counteract this maximum kinetic energy. मतलब the energy which will be coming from that potential, stopping potential, that will be balanced by this maximum kinetic energy. So we can write half mv square or k max will be equal to E into V naught. Again I repeat, stopping potential is a negative anode potential. It is a negative potential which stop or which can balance the kinetic energy of the electron. मतलब in place of k max we can write down E into V naught. ठीक है? Understood? So final equation क्या हो सकता है? देखो, what will be another equation? So we can write h mu is equal to phi naught plus ev naught. ये भी एक इक्वेशन हो सकता है. अंडरस्टूड? और ऐसे भी हो सकता है h mu is equal to in place of phi naught you can write down h mu naught plus ev naught. सब बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है. तो इससे मैक्सिमम चांसेस से न्यूमेरिकल मिल सकता है. सो न्यूमेरिकल क्या आ सकता है? देखो, if incident frequency will be given, you need to, and threshold and work function will be given, you have to find out maximum kinetic energy. You can just use this formula. Or sometimes it may ask incident frequency will be given, okay, and that work function will be given, you need to find out maximum velocity, so you can use that formula. Or sometimes maximum velocity will be given, work function will be given, you need to find out the frequency of incident radiation. And one more thing you remember, whenever you are writing this equation, as I have told, E is equal to phi naught plus क्या है? K max. ये हो गया आपका standard expression. So while considering the unit, E क्या होता है? hc by lambda or h mu, and that is always given in terms of joule. Like SI unit क्या है? Joule है. So you can convert from joule to electron volt as per the requirement of the question. जैसे कि phi naught is always given in terms of electron volt. Okay, kinetic energy, maximum kinetic energy is given in terms of joule. If both the parameter are given in joule, so better you convert that electron volt, that phi naught from electron volt to joule. अगर दोनों electron volt में दिया होगा, then third part you can convert from joule to electron. So that up to you. So मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर frequency is given in terms of hertz, so what is the unit of energy? Joule. If wavelength is given in terms of meter, what is the unit of energy? Joule. तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा from joule to electron volt. नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यू कैन कन्वर्ट टू जूल, लाइक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. अंडरस्टूड? सो ये जो कन्वर्सन फैक्टर है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन और हाउ यू अप्रोच. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू, तो जैसे कि तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए. अगर ये जूल होगा, ये जूल होगा, ये भी जूल होगा. अगर ये दोनों जूल है, डू नॉट टेक इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर से कन्वर्ट करो जूल में. ठीक है? सो एनीहाउ यू हैव टू मेक इट सेम. क्या क्या न्यूमेरिकल देखो. फर्स्ट इज when light of wavelength 5000 angstrom falls on a metal surface of work function 1.9 electron volt, find the energy of the photon, maximum kinetic energy of the electron and stopping potential.
मेरे को एक चीज बोलो, ये एक मेटल सरफेस है, when light falls on a metal surface what is the energy, फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बोला था, h म्यू और क्या है hc by lambda, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। h कितना है 6.64 इंटू सॉरी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय व्हाट इज लैम्बडा 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको एसआई में कन्वर्ट करो इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, एज यू नो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। जो भी आंसर मिलेगा ये आंसर किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा। ये आई थिंक फर्स्ट बिट हो गया, एंड ये फर्स्ट बिट तो हो गया, एंड सेकेंड बिट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बोला था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, ई मैंने क्या बोला था, ई इक्वल टू फाई नॉट प्लस क्या है के मैक्स, अंडरस्टूड। सो के मैक्स क्या है, व्हाट इज के मैक्स, so that will be E minus of phi naught. So E तो already we have calculated, that is joule. Okay, but work function phi naught is given in terms of what, electron volt. So ये तो joule हो गया, इसको ये इसका वैल्यू जस्ट डाल दो यहाँ पे। So phi naught क्या है 1.9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, तो ये भी जूल में मिल गया, तो इसको भी डाल दो। ये जो वैल्यू phi naught एंड E का वैल्यू इधर डाल दो, तो तुम्हें K max मिल जाएगा। K max जो भी मिलेगा किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा। फाइनल आंसर, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, बेटर यू डू फ्रॉम योर ओन। एंड थर्ड इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जैसे मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कौन बैलेंस करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो के मैक्स इज इक्वल टू ई इनटू वी नॉट, वेरी सिंपल। सो वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, के मैक्स अपॉन व्हाट, ई। इज इट क्लियर। सो ये वी नॉट वोल्ट में नहीं, तो बेटर यू डू वन थिंग, जो भी के ये मिल रहा है ना, क्या जो भी आपका के मैक्स मिल रहा है, इसको एक काम करो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। जो भी के मैक्स मिल रहा है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, लेट समथिंग इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दैट इज वी नॉट। सो ये कैंसिल, सो वी नॉट आपको मिल जाएगा दिस मच ऑफ वोल्ट, ये हो गया आंसर। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज गिवन, मतलब वर्क फंक्शन इज गिवन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने बोला था फाई नॉट क्या है, h इंटू म्यू नॉट। ओके, सो फाई नॉट क्या है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बिकॉज तुम्हें म्यू नॉट निकालना है इन टर्म्स ऑफ हॉट्स, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ जूल, अंडरस्टूड। ये दिस मच ऑफ जूल इज इक्वल टू h, h कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू क्या है म्यू नॉट, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट मिल जाएगा। यू कैलकुलेट फ्रॉम योर ओन। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। वेवलेंथ, वेवलेंथ किसका, वेवलेंथ व्हेन फोटो करंट बिकम जीरो बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। When this what is the value of wavelength of incident radiation when photocurrent becomes zero। मेरे को एक चीज बोलो, as per the Einstein photoelectric equation E is equal to phi naught plus क्या है K max, yes or no, yes or no। okay, E क्या है hc by lambda, E क्या है phi naught, phi naught is I think given, ठीक है, and you need to find out lambda, so plus K max क्या है, मैंने क्या बोला था EV naught, अरे yes or no। तो इसमें एवरीथिंग इज गिवन, V naught is given, phi naught is given, H is constant you know, C is constant you know, you can find out lambda। but one thing remember, lambda जो मिलेगा किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। so मतलब ये SI यूनिट है, SI यूनिट मतलब इसको जो तुम phi naught है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी गिवन, सो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये दोनों को जब ऐड किया इसको कन्वर्ट कर दो जूल में। जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अंडरस्टूड। तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, देन यू पुट हियर एंड यू गेट द आंसर ऑफ लैम्बडा, अंडरस्टूड। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, यू ट्राई फ्रॉम योर साइड। I'm just going to explain the concept, how to approach the question। Coming to next question, ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज गिवन, sorry, work function of any metal is given 2.8, मतलब phi naught is given 2.8 electron volt,
and wavelength of that light is given 5000 angstrom. So you have to find out mu naught and lambda naught. See phi naught क्या मैंने बोला, phi naught is h mu naught और hc by lambda naught. रेस और नो, तो दैट इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको एक काम करो, जूल में कन्वर्ट कर दो. 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना, -19. रेस और नो, तो इससे तुम क्या निकालोगे, इससे विल बी गेटिंग फाई नॉट, सॉरी म्यू नॉट, देन लैम्बडा नॉट भी मिल जाएगा. इज इट क्लियर? सो ये फर्स्ट बिट हो गया. सेकेंड बिट, लेट मी इरेज. सेकेंड बिट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. जैसे मैंने बोला था, एनर्जी आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स. अंडरस्टूड? सो वी नीड टू फाइंड आउट के मैक्स. तो के मैक्स क्या हो जाएगा, ई माइनस फाई नॉट. ये क्या है, एच म्यू, और एच सी बाई लैम्बडा डाल दो, बिकॉज लैम्बडा इज गिवन. सो एच सी बाई लैम्बडा माइनस सब क्या है, फाई नॉट. बट के मैक्स तुम्हें किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा. तो ये तो ऑलरेडी जूल में है, नो नीड टू कन्वर्ट. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, सबट्रैक्ट करो, विल बी गेटिंग व्हाट, के मैक्स. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा. नेक्स्ट भी मैक्स क्या है, जब तुम्हारा के मैक्स मिल गया, के मैक्स क्या है, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर. जो भी तुम्हारा के मैक्स मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जूल, व्हिच विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम बी स्क्वायर. तो इससे क्या मिल जाएगा, वी मैक्स मिल जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टेक अंडर रूट ले लो, ये मिल जाएगा वी मैक्स. Then fourth point is important. If intensity become 2 times, what about the maximum kinetic energy? No, intensity, maximum kinetic energy depends on the frequency of incident radiation or equal stopping potential. It does not depends on the intensity of radiation. मतलब intensity कुछ भी हो जाए तो K max में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. There will be no change in K max, maximum kinetic energy, with respect to intensity of radiation. ठीक है. So next is, ये एक NCERT क्वेश्चन है. फ्रॉम अ टेबल you need to compare, like different wavelength is given, अलग अलग मेटल, अलग अलग wavelength is given of light, sorry, मतलब अलग अलग wavelength is, so now coming to next question. ये एक NCERT क्वेश्चन है. मतलब there are 3 different wavelengths given, violet, green and red. So we'll have to find out energy in each case. ठीक है. सो एनर्जी ई कितना है, इज एच सी बाई लैम्बडा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. मतलब ई वन इज एच सी अपन लैम्बडा वन, ई टू क्या होगा, एच सी अपन लैम्बडा टू, ई थ्री क्या होगा, एच सी अपन लैम्बडा थ्री. बट जस्ट टू पुट द वैल्यू, मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. सी कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8. लैम्बडा इधर कितना है, 390 नैनोमीटर, मतलब 390 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. तो ये जो आपको मिलेगा ये जूल में मिलेगा. ठीक है. यू कैलकुलेट, तुम्हारा साइड से तुम कैलकुलेट करो, ये E2 भी मिल जाएगा, E3 भी मिल जाएगा, एज पर द क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला लिख लिया. सो मतलब यू आर गेटिंग E1, E2 and E3. सो ये पार्ट इज ओवर, ये पार्ट इज ओवर. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड पार्ट गिवन है, फ्रॉम व्हिच ऑफ द मटेरियल इन ए गिवन टेबल. एक टेबल दिया हुआ है, ये जो टेबल है सबका मतलब दिया हुआ है, डिफरेंट मेटल हैविंग डिफरेंट वर्क फंक्शन. लाइक सीजियम का सबसे लोएस्ट है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लैटिनम का सबसे हाईएस्ट है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो लाइक सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, एल्युमिनियम, ये सब दिया हुआ है. ठीक है. तो इससे हमें कंपेयर करना है. मतलब इट इज गिवन फ्रॉम द टेबल, वी नीड टू कंपेयर द मटेरियल हैविंग, जो भी वेवलेंथ है, which is suitable for photoelectric device. Which material is suitable for photoelectric device with this, by taking this wavelength. ठीक है. So the best way how to do, ये जूल में हो गया, इसको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो. कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया. सो विल बी गेटिंग 3 डिफरेंट आंसर फॉर 3 डिफरेंट वेवलेंथ. देखो मैं आंसर यहाँ पे लिखा हूँ क्रॉस चेक करने के लिए. So E1 is coming 3.19 electron volt, E2 is coming 2.26 electron volt, E3 is coming 1.64 electron volt. So now tell me,
1.64 तो कभी नहीं होगा क्योंकि मिनिमम कितना चाहिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये मेटल से अगर मिनिमम वर्क फंक्शन कितना है, so वर्क फंक्शन सीजियम का कितना है 2.14, मतलब हमें जो लाइट मतलब ये जो रेड लाइट वी आर प्रोवाइडिंग, रेड लाइट में वेवलेंथ ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो अगर रेड लाइट में जो एनर्जी आपको मिल रहा है दैट एनर्जी इज गिवन 1.64, मतलब दिस इज द एनर्जी व्हिच कैन गिवन टू द मेटल सरफेस, but minimum energy is given 2.14 electron volt which can help to escape out the electron। तो जैसे मैंने बोला था योर सप्लाई एनर्जी, द एनर्जी which will be given to the metal surface that must be more than work function। तो ये 1.64 is less than this one, मतलब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब दैट कैन नॉट बी सुटेबल फॉर दैट फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। ओके, देन कमिंग टू दिस 2.26, देखो 2.26 किसमें आ रहा है, तो 2.26 मतलब it is less than 2.3, मतलब only one material is suitable। अरे ये जो एनर्जी मिल रहा है दैट इज द एनर्जी व्हिच इज गिवन टू द मेटल सरफेस दैट मस्ट बी मोर देन वर्क फंक्शन। ये किससे ज्यादा है, ओनली 2.14 से ज्यादा है, मतलब ओनली सीजियम इज एप्लीकेबल। एंड फर्स्ट में क्या मिल रहा है 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.19 देखो इधर ही मिल रहा है आई थिंक 3.19 मतलब इसमें सीजियम पोटेशियम एंड सोडियम, सीजियम पोटेशियम एंड सोडियम, इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर देना, ठीक है। सो with this I am ending this lecture, hope you guys understood what I've explained। Thank you so much।